Now we all know very well that how can we formulate equations in 2D, like what we study in intermediate mathematics, the equation of a straight line. Now we are going to generalize the same idea to the equations in 3D, like mana x, y and z plane में असां equations of line के अंदर generate करे सघूं. So if we talk about a 2D plane and you want the equation of a straight line, what information do you need? A straight line जी तव्हांखे equation ॻोल्हणी आहे, तव्हांखे कहिड़ी information खपे हुन जे लाइ? Slope and y-intercept. Slope and y या ॿ पॉइंट हुजनि, माना अहिड़ियूं खोड़ सारी informations, माना at least we need two informations, at least two informations. One thing is that उहा कहिड़ी point आहे जेतां मुंहिंजी line pass थींदी, for example उहा कहिड़ी point आहे जेतां उहा line cross थींदी. For example, I am selecting a point, let's say this, and I am going to name it x naught y naught जेतां मुंहिंजी line जेको आहे उहा pass थींदी. इन जो मतिलबु इहो आहे त मां घरां निकिरां थो and जेको आहे मां कंहिं रेलवे स्टेशन ते पहुचां थो, and the railway station is the point. And ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेको रेलवे ट्रैक आहे, it will go only in one direction in which I want. Direction हिकिड़ो हूंदो, पर हुन में तव्हां फॉरवर्ड वञो या बैकवर्ड वञो, डायरेक्शन हिकिड़ो ई हूंदो. So this is the point which I call the railway station, या ॿियो कुझु तव्हां चओ, या तव्हां जेको आहे एयरपोर्ट वग़ैरह चओ. हाणे हितां जेका मां फ्लाइट पकड़ींदुसि, it will take a direction, whatever the direction is. हाणे मूंखे डायरेक्शन डिफाइन करणो आहे त हाणे मां कहिड़े डायरेक्शन में वञां. हाणे हुन डायरेक्शन जे लाइ या त मूंखे ॿी पॉइंट खपे, बाबा हिन पॉइंट ते बि हाणे तोखे हिन डायरेक्शन में वञणो आहे, या त हिन पॉइंट ते बि स्लोप खपे मूंखे, बाबा तोखे हिन स्लोप में मूव करणो आहे. So now I want some other information that okay, I reached at this platform, हाणे मां कहिड़े तरफ़ वञां. जेकॾहिं एयरप्लेन जी ॻाल्हि हले त माना एयरप्लेन हाणे हितां जेको असां वठूं, whether it goes to India or Islamabad or some other countries. So ई जेका information मूंखे खपे, let's take that information to be m, and जेकॾहिं मां हुन स्लोप सां मूव कयां थो त I will just move in that particular direction. हाणे तव्हांखे ख़बर आहे त स्लोप में असां कीअं मालूम कंदा आहियूं, that is rise ऐं run जो रेशियो हूंदो आहे y2 minus y1 upon x2 minus x1 जे बराबर हूंदो आहे. ऐं जेकॾहिं मां हिन जी इक्वेशन फाइंड आउट करणु चाहियां, that would be y minus y naught equals m x minus x naught. This is the equation of a straight line where you are given a point and the slope. Can I take the same information to a 3D plane or a 3D, माना जेको आहे R3 space में छा असां साॻी information खणी सघूं था. So this is my R3. I think he x हूंदो आहे right handed में. हाँ सही है. ईअं आहे. So I am taking a point with the coordinates x naught, y naught and z naught. छाकाणि R3 में हिकिड़ी पॉइंट आहे, हुन में हमेशा टे कंपोनेंट्स हूंदा. हाणे हिते मां बीठो आहियां, हाणे हितां मूंखे कंहिं पर्टिकुलर डायरेक्शन में वञिणो आहे. हाणे डायरेक्शन मूंखे हिते कहिड़ी शइ ॿुधाईंदी? डायरेक्शन जेकॾहिं मूंखे स्लोप ॿुधाए त 3D में R3 में स्लोप पाण डिफाइन करणु तमामु ॾुखी शइ हूंदी आहे. लाइक यू गो टू पार्शियल डेरिवेटिव्स, यू गो टू डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स. त हिते असां चवंदा आहियूं बाबा ही P नॉट आहे, हिन पॉइंट खां तोखे हिन वेक्टर जे, लेट्स से दिस वेक्टर इज V, इन जे पैरेलल हलणो आहे. माना स्टेशन खां मां हिते घर खां स्टेशन ते पहुचंदुसि, हाणे मूंखे पैरेलल कंहिंजे हलणो आहे, जीअं ही वेक्टर आहे उन डायरेक्शन में मूंखे मूव करणो आहे. So these are two informations that I need. इन्हनि two informations मां equation कीअं ठाहियां, what we call the equation of a line in 3D. So this point is P naught. What do you call this vector? Position vector. Position vector. Yes sir. Position. Can I name it R naught? चई सघूं था. ऐं मूंखे कहिड़े डायरेक्शन में वञिणो आहे? Parallel to vector given. हाणे हिन डायरेक्शन में मां का जनरलाइज पॉइंट तो खणा, उन पॉइंट खे मां नालो थो ॾियां XYZ. ठीकु आहे. ऐं हिन पोजीशन वेक्टर खे मां नालो छा थो ॾियां? R.
r is like जेको आहे असांजो पोजीशन वेक्टर जे बराबर आहे इन पॉइंट जे पोजीशन वेक्टर जे बराबर आहे नाउ what should be the vector representation of this particular thing माना मुझे चवण जो मकसद आहे मां हिन पॉइंट खां हिन पॉइंट ते पहुचण थो चाहियां त मूंखे छा करणु घुरिजे यानी कि मुझे सवाल इहो आहे त हिन वेक्टर जो नालो छा आहे ॿियनि लफ़्ज़नि में सिंपल आहे न हिन वेक्टर खे मां हिन वेक्टर सां ऐड कंदो छा मूंखे r वेक्टर मिलंदो Yes, sir. मिलंदो न हेड टू टेल रूल Yes, जे sir. सां Head to tail rule. but what should be the name for this vector is this v Yes, sir. पैरेलल ना माता इहो ॿुधायो त हिन खे खणी करे जिते रखो Yes, sir. Parallel rule. Okay. पर हिकिड़ो सुवाल थो उभरे हिन खे मतां ई करे छॾियो so that confusion न थिए इहो वेक्टर आहे Yes, sir. but the confusion is that छा इहा लेंथ है ये साॻी थी छाकाणि मां इहे जनरलाइज़ पॉइंट खणी आहे या मां हिते बि खणी सघां थो 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 so I multiply this thing with parameter t Parameter, yes, sir. ऐं t खे मां जेतिरो नंढो कयां तव्हांजी मर्ज़ी. मर्ज़ी आहे मर्ज़ी जेतिरो आहे. वॾो कयां मर्ज़ी आहे मर्ज़ी आहे. हिन खे पॉजिटिव कयां त हिकिड़े डायरेक्शन में Same नेगेटिव direction. कयां त Opposite direction. opposite direction so it depends upon me Yes, sir. so what you can get from here छा असांखे मिलंदो त बाबा r जेको आहे उहो हीअ शइ उहा छाजे बराबर आहे r नॉट plus t into Yes, sir. the vector r is r naught plus t times T vector times vector v r naught जा coordinates क्या हैं X naught करण Y naught करण. ऐं r जा coordinates क्या हैं X Y Z. x y z ऐं vector v के असां छा नालो ॾियूं कुझु बि नालो था ॾियूं Yes, दीदी sir. Yes, sir. हिन vector v के असां नालो था ॾियूं vector a b c C. अंता लेकिन हिन इक्वेशन के ओपन कंदो ऐं कंपोनेंट्स में सेपरेट कंदो त तव्हांखे हिकिड़ी उहा इक्वेशन मिलंदी Straight जेका तव्हां एस एम यूसुफ जे किताब में ॾिसंदा आहियो त बाबा दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ठीकु आहे सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन line. हाणे तव्हांखे इंफॉर्मेशन घणी हुजे सिर्फ़ु इंफॉर्मेशन पॉइंट हुजे Yes, sir. ऐं इंफॉर्मेशन तव्हांजो उहो वेक्टर हुजे जंहिं वेक्टर जे पैरेलल में Parallel. तव्हां Move के. मूव था कयो ओके लेट अस सी दिस ही वेक्टर छा थींदो आर वेक्टर छा थींदो एक्स वाई ज़ेड इन दीस कंपोनेंट्स आर नॉट छा थींदो एक्स नॉट X naught plus वाई नॉट एंड Z naught. ज़ेड नॉट प्लस ही छा थींदो T time A B C. एबीसी था टी मल्टीप्लाई थी वई तो Yes, sir. टी T A. है T B. टी बी एंड T C. टी सी हाणे जेकॾहिं हिननि खे बराबर कयूं त एक्स बराबर छा जी थींदी एक्स नॉट प्लस Plus T A. टी ए Plus T A. सो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस T A. टी ए वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस T B. टी बी एंड ज़ेड इज इक्वल टू ज़ेड नॉट प्लस T C. टी सी ऐं जेकॾहिं हिननि खे अञा तव्हां शॉर्ट कयो त एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय ए बराबर छा जी थींदो T. टी जे T. या y minus y naught divided by b या z minus z naught divided by c they all are equal to t T. so this is your equation of Straight line. straight line in In 3D. 3D so only two informations you need a point है तेरे x naught y naught z naught and divide में ता वो vector लिखंदो जैसा वो line parallel है you are done so now the question is can I relate the same thing 2D? Because this thing worked in 3D, it should work in 2D as well. If 2D में यह शे work नथी करे, then there's a problem. Okay, so look at this. हाणे असां वटि ये तव्हां equation याद हुजे you are done. R naught plus TB. हिते R असां का position vector था खणूं. Let's say this is R Yes, sir. with the coordinates X Y Z. x y. R naught is this point with the coordinates X naught Y naught. x naught Y naught. y naught and t times A what is vector v the problem is this 2D में असांखे ही स्लोप मिलेला m छा हिन स्लोप खे मां कंहिं वेक्टर में कन्वर्ट करे सघां स्लोप छा जे बराबर हूंदो चेंज इन y Yes, sir. Upon changing X. can I write this slope in this way m upon 1 m के m upon 1 लिखी सघूं ना Yes, sir. so this is your change in Y. y this is your change in X. x लेकिन अगर x y component में लिखो तो you can write in this way One command. 1 command Yes, sir. तव्हां x जी डायरेक्शन में हिकु यूनिट वियो ऐं y जी डायरेक्शन में तव्हां M units. m यूनिट्स वञो था त तव्हांजो स्लोप छा थींदो
m upon 1 upon which is 1. m. So this is the vectorial form of this particular slope. And इहा शइ मां हिते रखंदुसि v. v छा रखंदुसि 1m. So this would be t अंदर multiply था जो इहो थींदो t times tm. Now you solve it. x equals x naught plus t. plus t Yes sir. and y equals y y naught naught y naught plus plus tm. हिनखे तव्हां अञा simplified way में कीअं लिखी सघो था? x minus x naught. x minus x naught naught. upon 1 1 बराबर छा जे थींदो? T. t जे. हितां मां t थो कढां y minus y naught divided by m is equal to equals t. t. Yes sir. t नथा लिखूं. This is your equation of Straight line. straight line. Is it equal to this? yes sir Yes sir. इन जो मतलब इहो आहे त ही जेका generalized equation आहे it works in 2D as well as 3D 3D. Sir. But I think we can generalize it in any direction as well. सर जिते 1 वरतो x y जी जगह x जी जगह y जी जाते भी 1 वठी सघूं था मींस The slope असां जो m आहे. m असां x जनरलाइज कयो 1 हा, त इहो ॾिसो न, 1 था असां खे जेका इंफॉर्मेशन मिलियल हुई हुन में स्लोप असांखे m मिलियल आहे. m मिलंदा सर. स्लोप त कुझु बि थी सघे थो. Yes sir. त जेको m मिलियल आहे असां उन मां ई जेको आहे न इहे शइ कढण था चाहियूं. सिर्फ़ु असां इहो चेक था कयूं त whether this works for this case or not. कंडीशन की वेन त x जो वैल्यू 1 हुजे x जो वैल्यू 1 सर इहो कंडीशन मक़सद असां y जो वैल्यू 1 रखी सघूं था ऐं m upon 1 लिखियो असां 1 upon m लिखी सघूं था. या ऑलवेज m by reciprocal थींदो slope yes न थींदो न. yes sir. ॾिसो हाणे हीअं आहे त हिकिड़ी लाइन आहे yes sir. उन जो स्लोप m आहे. yes इन जो मतिलबु छा आहे? रेशियो अटेंडेड यस. sir. हिन जो मतिलबु इहो आहे त जेकॾहिं तव्हां के बि ॿ पॉइंट्स खणो ऐं राइट ट्रायंगल तव्हां फॉर्म कयो yes sir. त जेको ही असां छा चवंदा आहियूं राइज़. हिन क्वांटिटी खे असां छा चवंदा आहियूं? run रन. yes sir. राइज़ ऐं जेको रन जो रेशियो आहे एम उहो बराबरि आहे m m जे. ठीकु आहे. इहो रेशियो जेको आहे उहो बराबरि आहे m जे. हाणे मां राइज़ खे m खणां ऐं रन खे 1 खणां तॾहिं बराबरि थींदो m जे. तॾहिं m जे बराबर हाणे मां हिन क्वांटिटी खे छा कयो आहे? इनखे मां 1 खयो आहे 1 खयो yes ऐं sir. हिनखे छा कयो आहे? अच्छा m खयो आहे. ऐं इन ई इंफॉर्मेशन खे जेकॾहिं मां वेक्टर में लिखां त छा लिखंदुसि? 1 कमा. इक्वेट कयो सही आहे. छाकाणि त वेक्टर छा हूंदो आहे त तव्हां x डायरेक्शन में केतिरो था मूव कयो? 1. सो 1. y डायरेक्शन में केतिरो था मूव कयो? m. m कोई तव्हां हिकिड़ो वेक्टर डिफाइन करे सघो था जेको हितां खां yes sir. ईअं ईंदो आहे. यू गो इन x डायरेक्शन यू गो इन y. ये जो ड्राइव के असा 3D और 2D और फार्मूला हाँ. यानी रन वाली कंडीशन में 1 होती तरी राइट yes sir. छाकाणि त असां रिलेट हिन इंफॉर्मेशन सां था कयूं. yes sir. लेट करणो आहे तॾहिं करे असांजो करो. तंहिंजे करे या त कुझु बि थी सघे थो न. मां हिनखे m upon 1 न लिखां. मां हिनखे हीअं लिखां. हिनखे मां लिखां 1 upon m. ॻाल्हि त साॻी थी वई. हाणे हिन जो मतिलबु आहे त तव्हांजो y कंपोनेंट 1 आहे y बनना x कंपोनेंट 1 upon m आहे. yes sir. ॻाल्हि त वञी साॻी थी वई. So this is the equation in the case of 3D as well as 2D. So हाणे त तव्हांखे माना कोई हिकिड़ो पॉइंट मिली वञे ऐं कोई हिकिड़ो वेक्टर मिली वञे. Just you will put the values in this and you will get the equation. Let us do maybe the last thing for today. ऐं मूंखे लॻे थो त अॼु असां थोड़ियुनि शयुनि में टाइम घणो ज़ाया कयो आहे. So we'll try to speed up the things next time. So टेढ़ो मेढ़ो कयूं त then we have curves. उहे functions different हूंदा आहिनि. But in 3D असां पहिरियां स्टडी कंदा आहियूं प्लेन जी. और प्लेन खे असां जनरलाइज कंदा आहियूं डिफरेंट सर्फेसिस में. और प्लेन त माना जेको स्ट्रेट हूंदो बिल्कुलु. ऐं सरफेस असांजो कर्व बि थी सघे थो. पोइ उहो स्मूथ हुजे न हुजे, डिफरेंशिएबल हुजे न हुजे, कंटिन्यूअस हुजे न हुजे, that's something else. But right now we are going to define what do we mean by the equation of a plane. And a plane जी information जे लाइ साॻियो ई असांजो सुवाल आहे त what do we need to define a plane. माना हिकिड़ो जेको प्लेन आहे उनखे डिफाइन करण जे लाइ असांखे कहिड़ियुनि शयुनि जी नीड पवंदी. So let's take this plane in our 3 and one information is that I want a point from which this plane passes. माना अहिड़ी का पॉइंट हुजे. हाणे ही असां जेको रूम वेठा आहियूं 3D आहे obviously.
हिन में मां का हिकिड़ी पॉइंट खणा तो मुझे जेको प्लेन आहे उहो उन पॉइंट मां पास थींदो न नाउ द प्लेन कैन गो इन दिस वे इट कैन गो वर्टिकली एज वेल इट कैन गो समहाउ टिल्टेड एज वेल त हाणे मूंखे हिकिड़ी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन खपे त हिन पॉइंट मां जेको प्लेन पास थींदो उन पॉइंट मां प्लेन उहो कीअं थो पास थिए व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन whether it is going horizontally or vertically, in which direction. So I need some extra information to generate the equation of a plane. What is that extra information? वो extra information छा है? अच्छा और बुझे. You know very well कि this is going to be R naught, and for defining a plane I need one information that I need only a vector n which is perpendicular to that plane. छाकाणि त मूंखे जेकॾहिं इहा इंफॉर्मेशन हूंदी त this is my plane, it passes through that point. हीअ पॉइंट मां चूज़ कई इन मां ही प्लेन उते पास थिए थो. But I need only one information, I need only one vector which is orthogonal to that plane. And vector जेकॾहिं हिन डायरेक्शन में हूंदो त मुंहिंजो प्लेन ज़ाहिरी ॻाल्हि हीअं टिल्ट थींदो छाकाणि हीउ वेक्टर मुंहिंजे प्लेन सां छा हुअणु घुरिजे परपेंडिकुलर हुअणु घुरिजे. I need only this information. जेकॾहिं इहा इंफॉर्मेशन मूंखे आहे त हीउ वेक्टर हुन सां orthogonal in this direction or orthogonal in that direction doesn't matter. I need only that information. त पोइ पैरेलल में नथी कयो पैरेलल सां अगरि ॿियो प्लेन में पैरेलल आहे त उहो बि ख़बर ॿुधाए सघे थो. Maybe, but let me think. This is your plane and a vector which is उन पैरेलल लिखणो कोई पैरेलल आहे बिल्कुल प्लेन हिकिड़ो मिलियल आहे ऐं वेक्टर में सां बिल्कुल पैरेलल न भई छा उहो नथो ॿुधाए सघे साईं. no हीअ वाला उहो साईं हीअं this is your plane. Okay, मां हिनखे हॉरिजॉन्टली थो वठां त जी ॻाल्हि खे सम्झो. हाणे हीअ न पैरेलल आहे. हाणे ही हिकिड़ो वेक्टर आहे. जेकॾहिं मां हिन ते ही थ्रो कयां त सिधो किरे. जेकॾहिं ही पैरेलल न आहे ही थ्रो कंदुसि ही कुंड लॻंदी. उहो न आहे अगरि अचूं था तव्हांजी ॻाल्हि ते अचूं था. ही वेक्टर आहे which is parallel to this plane. Now I can tilt this plane around this. हिन वेक्टर जेकॾहिं हिन सां पैरेलल आहे त माना मां हिन जे अराउंड हिनखे टिल्ट करे सघां. सो मुंहिंजो जेको प्लेन आहे उहो खोड़ सारा प्लेन थी वेंदा. and I want a unique plane. And unique plane is only this condition which is orthogonal. So here you get the equation from these. This is the vector. इन जी लेंथ केतिरी हुजे कुझु बि न आहे पर हिन प्लेन सां उहो छा आहे orthogonal आहे means it's making an angle of 90. हाणे तव्हां हिन वेक्टर खे जाॾे बि खणी वञो पर जिते बि तव्हां खणी वेंदसि उन प्लेन सां उहो 90 जे अंदरि ठाहींदो. I am taking a point, a generalized point x, y, z, and this vector is R vector. What is going to be the name of this vector? Name of this vector is P naught to P. P naught to P, yes. छाकाणि त ॿिनि पॉइंट्स मां तव्हां जेको आहे वेक्टर कीअं जनरेट कंदा उन जा कॉम्पोनेंट्स तव्हां माइनस कंदा त ठीकु आहे x माइनस x नॉट एंड y माइनस y नॉट एंड z माइनस z नॉट. हाणे ही जेको वेक्टर मूं जनरेट कयो आहे इहो वेक्टर हिन वेक्टर सां छा हूंदो परपेंडिकुलर. छाकाणि उहो वेक्टर जेको आहे उहो मुंहिंजो प्लेन में थो लाहे करे ऐं जेको n वेक्टर आहे उहो उन पूरे प्लेन सां परपेंडिकुलर आहे. सो सिंपली द इक्वेशन ऑफ योर प्लेन वुड बी the vector n and the vector p naught to p are orthogonal to each other. It means their dot product is going to be 0. This is your equation of plane. Only you need two informations. Yes, sir. One is the point from which your plane passes and another is the information that the vector that is orthogonal to that plane. And dot product, that's going to be the equation for your plane. Let us take an example for this, then we are going to end. So the point is, let's say 1, 2, 3. It means 1 is the value of x naught, 2 is the value of y naught, and 3 is the value of z naught. And the vector n is, let's say 4, 5 and 6. And vector n छा थींदो 4, 5, 6. इन जी डॉट प्रोडक्ट असां छा था वठंदासीं p naught to p. p naught जा कोऑर्डिनेट्स आहिनि 1, 2, 3 and p is
x y z. So हिने कोऑर्डिनेट छा थी ना x minus 1, y minus 2 and z minus 3. ये कहना डॉट प्रोडक्ट पढ़नो 4 times x minus 1, 5 times y minus 2 and plus 6 times z minus 3 is 0. And you can always write this into this form: ax plus by plus cz equals d. This is the generalized equation of a plane. So इन्हें के simplify करे सामने वे में आसानी से लिखी सकूँगा. I will try to be a bit brief and to the point in next lectures, and we'll try to discuss the things which are going to be important for us. And I thought these two things and the discussions that we did before these are going to be a bit important. And the main things in this course are the multivariate calculus would be defining multivariate limits and differentiability, especially partial derivatives, and then multivariate integrals and some of the applications. Applications means extremas, minimas and maximas in the case of multivariate functions, and some sort of other applications like optimization and Lagrange multipliers in this case. So we'll be discussing only these things, and other things will be a bit related to formulas or theoretical basis, and there are some discussions in these. But maybe on topics में आसान लिखवाने इतनी in-depth discussion कौन होती, because discussing the concept and insight of any advanced topic is a bit difficult. ये तो माना शयूं थोड़ी straightforward हुई तरे माना उन शयूं के साथ discuss कियो से, otherwise मुख्य इनमें करने यो कपिया बाबा ये point आई vector आ, and this is the formula for the plane. But we need a bit discussion. जेका असां माना असां करे सघंदा से वो discussion थी, and maybe कुछ शयूं में in depth वञणु घणो ॾुखियो हुजे, because असांखे single variable calculus ही सही कोन्हे या multivariate कीअं अचे. It's the pity situation.